Hello, students. Hope you are fine and taking good care of yourself. Students, today we are going to start our first chapter, Crop Production and Management. Students, you know food is essential for survival. We get food from plants and animals. As human population is increasing day by day, the need for food to be produced on the large scale to meet the increasing demand. And for that, proper management and distribution of food produced on the large scale is also essential. So dear student, in this chapter we will be discussing about production and management of food. So let's start. First of all, students, what do you mean by term agriculture? Agriculture means growing plants and rearing animals for food, clothing and other useful product is known as एग्रीकल्चर मीन्स हम प्लांट को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं ताकि हमें उनमें से प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सके, उसे हम एग्रीकल्चर कहेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉप्स. Plants of same kind grown on a large scale for food, clothing, etc. are called crop. For example, several plants of wheat grown on large land area are called wheat crop. Means कोई particular crop जो है हम बड़े से एरिया में उगाएंगे तो उसे हम क्रॉप कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल वीट का दिया कि हम वीट को जो है बड़े से एरिया में ग्रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो कि वीट के क्रॉप्स मिलेंगे. सो अदर एग्जाम्पल्स आर फूड क्रॉप्स आर सीरियल्स लाइक राइस, मेज, वीट एक्सेट्रा. पल्सेस में हम उड़द, अरहर, मूंग, बीन्स इसको इंक्लूड करेंगे. फ्रूट्स लाइक mango, apple, banana, grapes and vegetables like spinach, potato and onion all are the examples of crops when they are grown on the large scale. There is a variety of crops grown all over the world, and on the basis of this growing season, the crops in India are categorized in the following two groups. The first one is Rabi crops and second one is Kharif crops. Now let us discuss about Rabi crops. Rabi crops are generally planted in November and harvested in April. For example, wheat, barley, peas, grams are all examples of Rabi crops. तो ये रबी क्रॉप को है नवंबर में हम खेती में लगाते हैं और वो पूरे पक के तैयार जो है अप्रैल में हो जाते हैं, तो इसे हम रबी क्रॉप कहते हैं. सो रबी क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? वीट, बार्ली, पीज, grams are all examples of Rabi crops. Next type of crop is Kharif crops. Kharif crops are generally planted in June and harvested in October. For example, rice, maize, cotton and groundnuts are examples of Kharif crops. ये खरीफ क्रॉप्स जो है हम जून में लगाते हैं और वो कब पक के तैयार हो जाते हैं? अक्टूबर में. तो अक्टूबर में हम उसका हार्वेस्ट करते हैं. इस टाइप के क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं. और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? राइस है, मेज है, जुआर है, कॉटन है, ग्राउंडनट है. ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. सो खरीफ क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन October. And examples are rice, jowar, maize, cotton, groundnut are all examples of
kharif crops. Students, there are another type of crops also. They are known as Zaid crops. These crops are planted in March and harvested in June. They are known as Zaid crops. For example, cucumber, muskmelon, watermelon, and sugarcane. So these are the examples of Zaid crops which are planted in March and harvested in June. Students, for growing crops, farmers performs a series of activities in a particular sequence over a period of time, and these activities are known as agriculture practices. ये फार्मर हमारे लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं उसके लिए उन लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में होती है, मीन्स एक के बाद एक, और ये सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ undertaken by farmer in particular sequence to maintain the supply of food is known as agriculture practices. And which are these practices which is performed by farmers? The first one is soil preparation. In that they'll carry three processes: plowing, leveling and applying fertilizer. The second one is selection and sowing of सीड्स. मीन्स जो भी सीड्स जो है वो बोएंगे वो प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और उसके बाद ये सीड्स को सॉ करने के बाद उसे पानी रेगुलर इंटरवल में देना है. तो उस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इरिगेशन. नेक्स्ट इज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन. मीन्स अनवांटेड प्लांट्स जो है साथ में उगेंगे उनको निकालना ताकि क्रॉप्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके. और लास्ट है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सो दीज आर द सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस which are performed by farmers. Which are they? Soil preparation, selection and sowing of seeds, irrigation, weeding and crop protection, and the last one is harvesting and storage. And all these practices are done by farmers in a sequence way is known as agriculture practices. Now we will be discussing all these practices one by one, and let's start with the first step, that is soil preparation. हमें पता है कि सॉइल जो है वो मेन मीडियम है जिस पे प्लांट्स जो है उगते हैं, क्योंकि हम जो सीड बोते हैं वो कहाँ पे? तो कि सॉइल में ही बोते हैं ताकि उसमें से प्लांट जो है उगे. और ये प्लांट जो है उसकी रूट्स ये पानी, हवा और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती है. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि रूट्स ये पानी, हवा और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है, तो सॉइल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं. अगर नहीं होंगे तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा. इसलिए हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है कि ताकि ये न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर जो है प्लांट के रूट्स को प्रॉपरली मिले और प्लांट जो है प्रॉपर ग्रो करे. तो इसलिए हम 3 स्टेप्स जो है यूज़ करेंगे. पहला है प्लाइंग, सेकेंड लेवलिंग एंड थर्ड इज अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स. So students, we know that the soil is the main medium in which plant grows, and roots of the plant absorb water, air and nutrients from the soil. And to ensure that these are available to the roots, we need to prepare the soil. So soil preparation involves 3 steps: plowing, leveling and applying fertilizers. So the first step in soil preparation is plowing. What do you mean by plowing?
The process of loosening and turning the soil is called as ploughing, or you can say tilling, or in short, to turn the soil upside down is known as ploughing. So why this loosening and turning of the soil is so important to the soil? Let's discuss. First of all, it allows the roots to reach deep into the soil. This helps to fix the plant more firmly to the ground. फिर जब हम प्लविंग करते हैं ना, तो सॉइल जो है एयर और मॉइस्चर को ट्रैप कर लेती है, जो रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है. फिर हम जो प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स जो ऐड करते हैं, तो जब हम प्लविंग करेंगे तो ये प्रॉपरली सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे. फिर ऑलरेडी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे वो ऊपर आ जाएंगे जब हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो, और विच इन टर्न हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्रॉपरली. और ऑल्सो ये अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो उगते हैं उसे हम वीड्स कहते हैं, उसको भी हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं. सो ploughing is important as it allows the roots to reach deep into the soil. This helps to fix the plant more firmly to the ground. It helps in trapping air in the soil and moisture for the longer duration. This ploughing also helps in bringing nutrient-rich soil to the top and also help to mix the fertilizer well, and in the end it also helps in removal of undesirable plants called as weeds. अब ये जो सारे टूल्स या तो हम कह सकते हैं औजार यूज़ करते हैं टू कैरी द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दे आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. सो the plow and the other tools needed to carry out agriculture practices are called agricultural implements. Mostly, plows are used to turn the soil upside down, and this plow are made up of wool, and they are drawn either by bullocks or other animals such as horses, camels, and even tractors are used. But nowadays, implement called cultivators are used as they save time and efforts. And these cultivators are driven by tractors and are increasingly used for ploughing. In the picture also you can see I have shown the picture of a cultivator, and tractor is using this cultivator for ploughing the soil, and it is most effective way also, and it consumes less time also. So the tools needed to carry out agriculture practices are called agricultural implements. Leveling is a process done after ploughing the field to remove big lumps of soil. These big lumps of soil are known as clods, and these clods are crushed using planks made up of wood and iron, and the planks are also known as levelers. लेवलिंग का मतलब कि जब हम प्लविंग करते हैं सॉइल की, मीन्स सॉइल को अपसाइड डाउन टर्न करते हैं, तो उस टाइम पे सॉइल के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, या उसे हम लम्प्स कहते हैं या तो क्लॉट कहते हैं, उसको जो है फाइन पीसेस और फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल में टर्न करना विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन और वुड, उस प्रोसेस को हम लेवलिंग कहेंगे. और ये जिस आयरन या तो
वुड के प्लैंक से हम लेवलिंग करते हैं उसे हम लेवलर्स कहते हैं। और इसका क्यों यूज़ करते हैं? ताकि रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर प्रॉपरली ग्रो हो सके और वाटर और मॉइस्चर को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके। सो दिस प्रोसेस टू रिमूव big lumps of the soil is known as leveling, and the plank which are used to crush the soil are known as levelers. And why the leveling is important? As it enhances the soil porosity and hence helps the roots to respire easily. Also, it helps to remove the lumps of the soil. जब हम फील्ड में क्रॉप्स बोते हैं तो ये क्रॉप्स जो है सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो। बट अगर ये क्रॉप्स जो है लगातार लंबे टाइम तक जो है हम सेम फील्ड में उसको ग्रो करेंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर देंगे और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी बिकॉज न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो इस वजह से फार्मर्स जो है सब्सटेंस कॉल्ड फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करते हैं ताकि ग्रोथ जो है क्रॉप्स की प्रॉपर हो और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी मेंटेन रहे या तो उसका बैलेंस रहे। सो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल or chemical substance that contains one or more nutrients essential for the plant growth. Fertilizers can be both natural and chemical. Now, first of all, we'll discuss about natural fertilizers. Students, ये natural fertilizer जो है हमें plant और animal waste में से मिलता है और ये soil का humus content जो है वो increase करता है और वो कोई harm नहीं करता है soil को और environment को। और उसके example है manure, compost, neem bark, bone meal. So, natural fertilizers are obtained from plants and animal waste. They increase the humus content of the soil, and manure, compost, bone meal, bark of neem are the examples of natural fertilizers. अब दूसरे टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्री में बनते हैं यूजिंग केमिकल्स और ये ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल को इंक्रीज नहीं करते हैं। सो केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर chemical substance produced in factories. They do not increase the humus content of the soil. Urea, ammonium sulfate, potash, NPK fertilizers are few examples of chemical fertilizers. Students, hope all the concepts which we learned in this video are clear. Keep on learning. Utilize your time. Stay safe and stay at home.